So this is basically P1 for the topic we started off with. ठीक है, तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन होंगे. अच्छा, हमारा जो अभी नेक्स्ट डिस्कशन होने वाला है उसमें we have to discuss estimates and things like those. So let's try some questions here without estimates and all. So let's try question 2. It says which of the following correctly expresses the volt in terms of SI base units. So they want us to express volts in SI base units. So volts was primarily speaking work done per unit charge, or work is measured in joules, right? And charge is in coulombs. So if we kind of figure this out, joules को base units में convert करेंगे. So joules was Newton into meters according to the formula F into D. And coulombs की जगह में हम base units directly लिख सकते हैं ampere into second because Q is equals to IT, right? Newton की जगह पे we can write kilograms, meters per second squared, then meters we have amperes in seconds. So basically what we end up with is kilograms, meters squared, ampere inverse, second minus 3. So do we have any options here? Yes or no? So that's D. Is this understood by each and every one of you? I need responses. लिखने की जरूरत नहीं है. Yeah, thank you very much for your response. आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी और आपको ये इमेजेस भी मिल जाएंगे. Just what you have to do here is कि आपको समझ में आ जाएगी. ठीक है? Okay. Then I can move on. So we have question 5 here. Question 5 में accurate मैथ की बात हो रही है, वो भी हमने नहीं किया हुआ. Let's move to 7 भी अभी हमने नहीं किया हुआ. 9 भी अभी हमने नहीं किया हुआ. Yeah, we can try this. हमने ये किया भी था, I think. Paper 1. It says the drag force F acting on a moving sphere is the equation F is equals to kV squared, where it represents the sphere's frontal area. A is area, V is speed, okay? And then they want us to find out the base units of K. So again, F is in newtons. So newtons is kilograms, meters per second squared. K is what we are interested in. We don't know what K is. A becomes the area, that's meter squared. V is meters per second whole squared. So this becomes kilograms, meters per second squared, and this is unknown. We are interested in that. That's meters squared second minus 2. So what happens? When we simplify it, we are going to get kilograms, meters, second minus 2 can be cancelled from both the sides. We have then left K and meter with power 4. So we can also simplify it. This becomes kilograms is equals to K cubic meter. So kilograms over cubic meter would be K. So do you see any options? So that's C. Is this understood? Because whoever has joined, please ask other students to join because this is very important. Once you miss this P1 wali class, you're going to regret it later. Okay, okay. So question 2, these are the kind of questions which I kind of love, enjoy. It is the table contains some quantities together with their symbols and units. Okay, so we have gravitational field strength, जिसका symbol है G, unit is newtons per kilogram, blah blah blah. We have all units here. They say which expression has the units of energy. Now you have to find out which of these is going to give us energy. Okay, so energy का unit होता है joules, right? और joules के तक पहुंचने के लिए हमें बेसिकली बेस यूनिट्स का सहारा लेना पड़ेगा जो उन्होंने हमें यहाँ पे दिया है. अच्छा, बेस यूनिट्स में जाते हैं, सो दैट्स न्यूटन मीटर, राइट? तो अब आप यहाँ पे नोट करो कि मुझे चाहिए न्यूटन मीटर. इनमें से किसी को भी सॉल्व करके मुझे चाहिए न्यूटन मीटर. तो बहुत सारे शॉर्टकट्स हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल क्योंकि अभी हमने सिर्फ शुरू किया है तो अभी हम शॉर्टकट्स पे जाने की कोई जल्दी नहीं कर रहे. अभी हम आराम से इसको सॉल्व करते हैं. So first part says we have G. G is newtons per kilogram. Then we have density. Density is kilograms cubic meter. Okay. H is height. That's meters. And V is volume. That's cubic meter, right?
तो किलोग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट, न्यूटन बच जाएगा. Then we have cubic meter inverse and cubic meter positive. So what's left is Newton meter, right? Is that correct? तो पहले ही ऑप्शन पे हम अपना करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं. Any questions, any doubts from anyone? So has everyone got this part? Beta, please respond. क्या मुझे बी सी डी चेक करने की जरूरत है? नहीं, बिकॉज ए इज द करेक्ट ऑप्शन, तो सही है. क्या? ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर द रिप्लाई. ये अभी हमने सब करना है. ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट्स वाला हमने ऑलरेडी कर लिया था. प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम हैज द सेम बेस यूनिट्स, ये हम कर सकते हैं. सो द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, दैट्स पी एंड वी, हैज द सेम बेस यूनिट्स एज. तो पहले इसको फिगर आउट कर लेते हैं कि प्रेशर एंड वॉल्यूम का बेस यूनिट क्या बनेगा. तो फिर हम आगे चले जाएंगे. प्रेशर बेसिकली इज एसेंशियली फोर्स पर यूनिट एरिया एंड वॉल्यूम इज लाइक दिस ओनली. तो फोर्स की जगह पे वी कैन राइट न्यूटन स्क्वायर्ड मीटर्स, और यहाँ पे वी हैव क्यूबिक मीटर्स. तो इसमें कैंसलेशन हो सकती है. व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर अभी थोड़ी देर पहले ही आपने किया था एफ और डी का. बेसिकली बेस यूनिट होगा, और एफ और डी इज बेसिकली वर्क और एनर्जी, राइट. So the correct option should be A. Is this understood? Thank you very much. बेटा आप लोगों के सबके फ्रेंड्स हैं क्लास में? सबने सबको जगा दिया उसने? सब उठ गए हैं? That is nice. अनसर्टेनिटी हमने करना है, अभी तक हमने नहीं किया है. वोल्ट्स आ गए हैं फिर से, ये आ गया है फिर से, ये आ गया है माइक्रोमीटर, फिर वोल्ट्स आ गया है, फिर हमारे पास ये आ गया है. Then we have बेस यूनिट्स वाली बात हो गई हमारी. ठीक है, अच्छा, ओके. एक मजे का क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी हमने कर लिया है. नहीं, और आगे चलते हैं. Let's try. ये वाला कर सकते हैं हम. So question 1 talks about submultiples and multiples. Which row gives the submultiples or multiples represented by pico and giga? ये जो लिस्ट आपको मैंने दी थी लास्ट क्लास में, उसमें ये इंक्लूडेड था. pico is always exponent -12 and giga is exponent 9. So ये याद करना होगा, याद कर लीजिएगा. And it says which definition is correct and uses only quantities rather than units. That means we are not interested in units. We are only interested in quantities. अब आप देखें कितने मजे का क्वेश्चन है. डेंसिटी इज मास पर क्यूबिक मीटर. तो फॉर्मूला तो सही है, डेंसिटी ऐसे ही होता है, right? But density is mass per cubic meter. Now, what's questionable here is mass is a physical quantity. That's nice. That's correct. But cubic meter is not a physical quantity. What it is basically a unit, right? So they're interested in only physical quantities. They're not interested in units. So A shouldn't be the considered correct answer. Let's talk about B. It says potential difference is energy per unit current. So basically potential difference is एनर्जी पर यूनिट करंट. ऐसा कोई जिंदगी में कभी फॉर्मूला देखा है आपने? लेट्स थिंक. तो पोटेंशियल डिफरेंस इज एनर्जी पर यूनिट करंट. बेसिकली आपने जो फॉर्मूला देखा है दैट इज बेसिकली वर्क डन पर यूनिट चार्ज. पोटेंशियल डिफरेंस का या कोई और फॉर्मूला आपको याद आ जाएगा तो ओम्स लॉ वाला याद आ जाएगा, दैट वुड बी आई आर. लेकिन ये नहीं होएगा, राइट? तो आई एम राइट नाउ नॉट इंटरेस्टेड इन बी. लेट्स सी सी. इट इज प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया.
So is that basically a physical quantity? Force, that is correct. Area, is that a physical quantity? Answer is yes. So we'll go with C because this is force and area. So both of these are physical quantities. Both of these are physical quantities, right? So it should be C. Speed is distance traveled per second. ये क्यों गलत होगा? क्योंकि distance is a quantity per second is not a quantity. Second is a unit. You guys get this? Is this understood? Very nice. Thank you very much. Let's move ahead. Save further things. Let's move ahead. आगे चलते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स ये भी नहीं करना है, कैलिब्रेशन ये भी करना है और okay, so question 2 talks about homogeneity. It says to check calculations, the units are put into the following equations together with the numbers. Which equation must be incorrect? तो ये कौन सा incorrect? तो basically numbers को देखकर आप परेशान नहीं हो. Numbers are useless. We are more interested in the physical quantity itself. So option A talks about force, that's joules per meter. So let's figure this out. Joules की जगह पे कहना है Newton meter, right? Why Newton meter? Why? Because joules comes through work, and work is force times displacement, right? And then it's meters. So इसका गलत दबा सकते हैं. So what happens here? Newton, right? Force has the unit of Newton, but that is correct. So they are asking about an incorrect equation. ये तो correct है. तो इसका मतलब है ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता. Let's try B. That's power. That's joules into seconds. So what we remember for power was work done per unit time, right? We never remember anything like work done multiplied by time. It's divided by time. So this appears an incorrect option. तेज बारिश हो रही है क्या? लग रहा है तेज बारिश हो रही है. एक मिनट रुको तो ना मैं देख के आऊँ. चलो तुम लोग बता देना, मुझे कोई टेंशन नहीं है. लेट्स सी. So is this correct? So that is correct because meter divided by meter per second will basically end up with seconds. ये ऊपर आ जाएगा तो ये सही होगा. Meter per second square times second, तो second -1 हो जाएगा. That is also correct. तो A, C and D are correct, but हमें incorrect ढूंढना था तो B is the only incorrect option. ठीक है. Good. अच्छा, रीजनेबल एस्टिमेट वाला भी हमने करना है, अनसर्टेनिटी वाला भी अभी हमने करना है काम, तो बाद में करेंगे. अभी उस पर टेंशन नहीं है. Move ahead. Then we have ये भी बात हुई थी हमारी. आगे चलते हैं और मजीद नया दिखाओ यार. यहाँ आ गया रैंडम क्वेश्चन. तो ये ट्राई करते हैं. It says question number 3 में the drag coefficient CD is a number with no units. Okay, so it has to have no units. It is used to compare the drag on different cars at different speeds. It is given by the equation this. That's the equation given. Where F is the force, rho is the density, and then we have A being the area and B is the speed. So they want me to find out N. So how do we do that? ठीक है, कैसे? So हमें चाहिए CD. CD पे there is no unit, right? So it has to be force over density times speed times area, right? तो हमें यहाँ पे चाहिए नो यूनिट्स. दैट मीन्स वन चाहिए बेसिकली. तो अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं न्यूटन,
So that would be kilograms meters per second squared. Density की जगह पे we can write kilograms per cubic meters. V की जगह पे we can do meters per second with n and area is meters squared, right? अच्छा, अब अगर हम इन सब को सिंप्लीफाई कर लें तो किलोग्राम्स का तो खत्म हो जाएगा, राइट? मीटर और मीटर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, राइट? सो व्हाट इज लेफ्ट इज न्यूमरेटर में we have second minus 2, denominator में we have minus 3, we have ms and we have m here, right? So finally this becomes s minus 2, this becomes m minus 2, this becomes m per s with n, right? So we have to figure out कि 1 आ जाए. That means we have to figure out कि कुछ ऐसा हो कि ये ऐसी वैल्यू हो जिससे ये सब कैंसिल आउट हो जाए. तो अगर मैं इसको कैंसिल आउट करना चाहता हूँ तो आई थिंक इसको 2 होना चाहिए. और वो 2 मुझे कहाँ से पता चल गया? वो 2 मुझे इन दोनों को देख के पता चल गया, राइट? बिकॉज अगर ये +2 होगा तो मीटर -2 और मीटर +2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट? और एस न्यूमरेटर में चला जाएगा और +2 और -2 वहां से भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट? इट बेसिकली बिकम्स 2. विद दिस अंडरस्टूड. इसमें वो लंबा काम नहीं करना चाहिए हमें कि हम पूरा लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, फिर राइट हैंड साइड पे देखें, फिर होमोजेनिटी को लेके आए. उससे ज्यादा आसान काम में जान छुट रही है. क्या कहते हैं? Do you guys get this? Is this understood? Any doubts, any questions in this? Okay. समझ में आ रहा है सबको? जो लोग नए हैं, पुराने, सबको समझ में आ रहा है? ओके, दैट्स नाइस. लेट्स मूव अहेड. सो वी डिड क्वेश्चन 3 तक यहाँ पे. अच्छा, मैंने पता नहीं पिक्चर लिया है, नहीं लिया, 1 मिनट. या ये पिक्चर ले लेते हैं. लेट्स सेव इट अप एनीवेज. मूविंग अहेड. देखो, P1 के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि P1 के अंदर यू हैव टू बी प्रूडेंट, यू हैव टू बी क्विक. ये मेरी स्ट्रेंथ नहीं है, ये मेरी वीकनेस है. P1 में मैं स्कोर नहीं कर सकता, मैं करने में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ P1 में स्कोर. मैं P2 में स्कोर करूंगा. मैं पहले दिन से चला रहा हूँ, मैं P1 में स्कोर नहीं करूंगा, मैं P2 में स्कोर करूंगा. P1 में मैं अपनी जान बचाऊंगा. जब मैं P1 में अपनी जान बचाऊंगा तो मैं बहुत स्पीड में काम कराऊंगा और बहुत लिमिटेड ऑप्शंस ट्राई कराऊंगा. जल्दी जल्दी काम करना होगा मुझे. और अगर मैं वो नहीं करूंगा तो देन we lost. Okay, so then let's try this. It says question number 4. What is it? It says the spring constant K of a coiled wire spring is given by the equation. Okay. So first मैंने कहा था कि कभी भी फॉर्मूला देके we don't have to worry, right? हमें परेशान नहीं होना, हमें टेंशन नहीं लेनी. अहमद, अलीम और आदिल, बेटा आप अगर मुझे माइक पे बता देते ना तो मैं आपको जल्दी से कैटर कर लेता. लेकिन आपने मुझे अब बताया है तो अब एक काम करते हैं, पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद वापस चले जाएंगे आपके क्वेश्चन. क्या कहते हैं? क्योंकि मैंने चैट बॉक्स बंद किया हुआ है तो वो मुझे नजर नहीं आ रहा कि आप क्या चैट करना चाह रहे हो मुझसे. ठीक है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देन विल मूव टू द अदर क्वेश्चन. ठीक है. अच्छा, पहले से द स्प्रिंग कांस्टेंट के ऑफ अ कॉइल्ड वायर spring is given by the equation that's gr4 4n r cubed. So where r is the radius, n is the number of turns, okay, and r is the radius of each of the turns of wire. So basically there are 2r and then that's the radius, right? Radius is तो meters में होगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है. The quantity g depends upon the material from which the wire is made. What is a suitable unit for g? Where the only piece of information you require from your O levels is कि spring constant is k. So spring constant अगर k है तो spring constant का क्या unit होगा? Anyone? Anyone in the chat box? Spring constant k. जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से. नहीं, no one has. जबरदस्त. I have answers. Okay, I have answers. I have few correct and few incorrect answers. Spring constant था Hooke's law. Hooke's law was F is equals to k times x.
Very good, Zabardast. That's nice. So that is Newton per meter, and that's K, right? तो K का यूनिट ये होगा सही है अब you have to just find out the units for G. So let's do what we have been doing since long now. Newton per meter on left hand side. G is the quantity we are interested in. R is radius that has to be in meter. So R with power 4 लिखा हुआ है तो meter with power 4. 4 is dimensionless. 4 का कोई unit नहीं होगा. Just leave it as it is. N was some number of turns. Number of turns का क्या मतलब हुआ? See, number of turns basically एक number ही होएगा ना. अब अगर 1 टर्न है 2 टर्न है 3 टर्न है 4 टर्न है 5 टर्न है तो 4 टर्न लिखा हुआ है अगर तो टर्न्स का कोई मतलब यूनिट थोड़ी है टर्न्स तो क्वांटिटी है सो क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस so 4 and n they both are dimensionless we don't have to worry about that then we have r that's cubic meters so we can cancel this so we can cancel this this is Newton per meter. Then we have G and M. So what's next? It becomes Newton meter into meter, that is G. So what this translates to is G into Newton meter squared. So do we have any options here? That's A, right? Is this understood to each and every one of you? Do you guys get this? जो लोग सो रहे हैं उनको भी समझ में आ गया जो लोग जाग रहे हैं उनको भी समझ में आ गया Come on, guys, I need responses. मैं सो जाऊंगा इससे तो. Do we get this? Is this understood? Zabardast. That's so lovely. We have answers. That's nice. चीता हो गया. अच्छा भाई आगे चलते हैं. यार अरेज आगे चलते हैं अभी पीछे बाद में आएंगे राइट थोड़ा सा आगे चलते हैं मैं एक दो और मजे का क्वेश्चन कराना चाहता हूँ P1 का जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग करो नो दैट्स आउट ऑफ लव चाहता हूँ कि आप लोग करो चलो लेट्स ट्राई क्वेश्चन 3 इट सेज द स्पीड v ऑफ अ लिक्विड अच्छा उस दिन भी कहा था इतनी इतनी कोई मतलब रॉकेट साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं जस्ट फिगर आउट व्हाट दे आर डिमांडिंग दे वांट अस टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n ओके फर्स्ट सी एंड वेयर इज n दिस इज n let's zoom in a bit let's get this thing here थोड़ा सा zoom in और कर लेते हैं yeah this makes more sense okay so what we have here we have n which we are interested in and then we can just read it v speed okay that's speed then we have some quantities k and k has no unit इससे जान छुट गई हमारी that's delta p that's change in pressure and then what's this I think this has been hidden somewhere there so that's density okay anyways that's density that's nice so now we have to work out the value of n so left hand side is speed का unit क्या होएगा meters per second dimensionless is k just let's skip that delta p that's pressure pressure was pascals pascals was force per unit area so that was force was newtons and area is the square meters so what do we have here we have kilograms, meters per second squared, and then we have meters squared. This gets cancelled. What do we have? Kilograms, second minus 2, m minus 1. सही है भाई तो डेल्टा पी के साथ हम लिख सकते हैं किलोग्राम्स m माइनस वन एंड s माइनस टू ओवर डेंसिटी व्हाट वाज डेंसिटी का यूनिट डेंसिटी का क्या यूनिट होता है भाई एनी आइडियाज किसी को याद है आई थिंक सबको याद है आंसर बोलने से पहले ही आ गया चैट में दैट्स किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर दैट्स नाइस or then we have n n is what we are interested in suggest me something what should I do let's do some eliminations kilogram से इसका खात्मा हो जाएगा we have meters per second then we have meter minus 1 and then we have meter minus 3 so let's bring this up here so this becomes minus 1 plus 3 that's 2 let's bring this guy down so there is no more negativity left in the question now think what should n be think so in order to be this physical quantity or equation correct, mathematically correct or homogeneous, what we should do is जबरदस्त दैट्स लवली देखा अभी मैंने कुछ क्या कहा भी नहीं था आंसर आ गया दैट्स नाइस तो इन ऑर्डर टू सी कि ये होमोजेनियस है व्हाट शुड वी डू लेफ्ट हैंड साइड पे वी हैव मीटर्स पर सेकंड right hand side we have meter squared over second squared and then we have a whole exponent here that's n so I can just kind of rewrite right hand side this way is that correct
And then we have learned this mathematical rule that says k exponent ka exponent they multiply. So that's 2n, right? So can I equate it to the exponent here? अब out of nowhere ये 1 आ गया. तो 1 कह रहा होगा कि मैं ऐसी सिचुएशन में खुद ही आगे आ जाता हूँ. तो 1 आ गया भाई, आ गया तो आ गया. So what? So 1 now can be equated to 2. So this would be 1 over 2 as n. तो मैंने ये क्या किया है? मैंने laws of exponent use किया. Whenever bases are same, we can equate exponents, right? Is this understood? So we ended up with this equation. Then we figured out n should be 1 upon 2, right? Is this thing clear to everyone? Those who are sleeping, those who are awake, जाग रहे हैं, सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं क्लास में, नहीं है क्लास में? हाँ, भाई चैट बॉक्स में लिखे ना कुछ तो क्लियर. दैट्स नाइस. नाइस, दैट्स नाइस. अच्छी बात. अच्छी बात, गुड, नाइस, अच्छी बात है. मजा आया आप लोगों के साथ बात करके. तो अब आप मुझे बता दें कि वो जो बच्चे कह रहे थे कि कुछ क्वेश्चन में मसला था, वो कौन सा क्वेश्चन था, सजा दें. थोड़ा सा ऊपर चले आते हैं क्योंकि वरना मैं भूल जाऊंगा. ये वाले क्वेश्चन में मसला था मेरा बच्चा? नहीं, इससे पहले वाला था एक्चुअली. राइट, इससे पहले वाला कौन सा क्वेश्चन? इससे पहले वाला ये वाला क्वेश्चन था जिसमें आप इंटरेस्टेड थे कि मैं आपकी हेल्प करूँ. यस. इसका लास्ट. तो कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा से कर लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है. लास्ट स्टेप तो मुझे याद नहीं. देखो, दिस इज नो यूनिट्स, राइट? तो इसका कोई यूनिट नहीं है, तो लेट्स राइट 1 हियर. फोर्स की जगह पे न्यूटन है, आई जस्ट रोट किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. देन डेंसिटी की जगह पे आई रोट किलोग्राम्स cubic meter. V was meters per second with power n and A was meters squared. ये हमने कर दिया, ठीक है. Then I ended up with किलोग्राम का खात्मा कर दो किलोग्राम से. मीटर -3 और मीटर +2, दैट वुड बी बेसिकली मीटर -1. तो अगर ऐसे नहीं समझ में आएगा तो ऐसे तो समझ में आ ही जाएगा. दिस वुड बी सेकंड -2 ओवर m -3 and then we have m over s with power n and then we have m right here. So this can then be simplified to s -2 over meter -3 and meter. So this becomes meter -2. Then we have meter s over with power n, right? Is this understood? Now, what I did in the next step was there are many things you can do. You can just bring this here. You can just bring this term here. अगर आपको समझ में नहीं आता ना, this is basically on right hand side. So if you shift it to left hand side, what happens? Basically, this becomes meters second with power n times 1, which is just ignore that. So that's basically s -2 and m -2. Is that correct? तो अब अगर मैं s को नीचे ले जाऊँ और m को ऊपर ले जाऊँ, so what I'll get in return would be m over s with power n, and this would become m over s with power 2. So can I equate n being equals to 2? पहले मैंने कुछ और किया था, मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट किया था. तो जब मैंने शॉर्टकट किया था, इज दिस ओके? डू यू गाइस राइट? यस सर. लवली, जबरदस्त. सीखने दौरान मैं समझा रहा हूँ भाई, तो मजा तो आना चाहिए ना यार. चलो खैर, नहीं आगे चलते. थोड़ा सा कोई मुश्किल सवाल नहीं यार, मुश्किल सवाल क्या है, मुश्किल सवाल होना चाहिए. चलो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन. और ये स्केलर वेक्टर वाला भी साथ में कर लेते हैं, इसके बाद मैं आपकी जान छोड़ दूंगा क्योंकि ज्यादा पढ़ाई सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है. तो थोड़ा सा आज ट्राई करते हैं. रेनॉल्ड्स नंबर, और क्या याद करा दिया यार. रेनॉल्ड्स नंबर होता है जो, मैं आपको बता दूं. रेनॉल्ड्स नंबर होता है जो फ्लूइड फ्लोस को जो है ना डील करता है. तो अगर एक वाटर मशीन हमें डिजाइन करनी है, सेंट्रीफ्यूगल पंप डिजाइन करना है, सक्शन पंप डिजाइन करना है,
हमें ये डिसाइड करना है कि वो कितनी हाइट पे वाटर को लेके जाएगा नहीं लेके जाएगा. सो व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन रेनॉल्ड्स नंबर आर. ठीक है. So it is a constant used in the study of liquids flowing through pipes, ठीक है, and it has no unit. तो आपके काम की चीज है कि no unit. चलो one हो गया. Then we have density, then we have speed, then we have diameter, and then we have mu, right? Mu कहते हैं सर. So they are interested in working for mu. तो ये mu निकालना क्या होना है, निकाले तो कोई मसला ही नहीं है. सो वी कैन राइट 1 इज इक्वल्स टू डेंसिटी की जगह पे किलोग्राम्स क्यूबिक मीटर इनवर्स, स्पीड की जगह पे मीटर सेकंड इनवर्स, डायमीटर इज ऑलवेज मेजर्ड इन मीटर्स, देन वी हैव म्यू अननोन, राइट. तो राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं. सो वी कैन एंड अप विद किलोग्राम्स. -3 +1 and +1 would become -1, right? And second -1. So do we have anything like that? That's D. Is this understood? Nice. Good. So question 3 tells us that how many vector quantities and scalar quantities does this equation contain? So what was a vector quantity anyway? A vector quantity was something that has a direction. A scalar quantity is something that doesn't have a direction. सही है? So vector quantity and scalar quantity इसमें से कौन कौन से हैं? तो पहली चीज तो ये कि let's talk about force. So force F moves its points of application through a displacement S. So then we have displacement S. अब ये इसका कोई तरीका नहीं है ये समझाने का कि भाई ये क्यों वेक्टर है ये क्यों स्केलर है. याद करना पड़ता है कि there are certain quantities which are vector quantities. Force is one of them. Force is a vector quantity. Displacement is another vector quantity. So there are two vector quantities. Now comes the real test. ठीक है. Now comes the real test. दो vector quantities तो हैं. तो that means कि अब हमारे पास जो option बचता है, चलो बेहतरीन, दो वेक्टर क्वांटिटीज का तो ऑप्शन एक ही में बनता और कोई है ही नहीं. तो डेफिनेटली है. या डेफिनेटली. तो वर्क इज अ स्केलर कॉन्सेप्ट, बाकी वेक्टर. तो यहाँ तक सबको सब कुछ समझ में आता है. किसी का कोई डाउट क्वेश्चन रह गया, कोई बात करनी? Done. I'll post this recording on your on my YouTube. Okay, you can go through it. If you find anything difficult, you'll get this booklet once you resume in class. And Tuesday, ko inshallah, we are going to start up with a new topic. So don't get absent on Tuesday. Monday वाले दिन you'll have your lab. ठीक है. और लैब के लिए टाइम पे आ जाइएगा. बाकी मुझे आपसे कोई और बात. ठीक है. So let's end this. Take care. See you guys. Allah Hafiz.